Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the sonnet number 77. So 77 लिखना थोड़ा सा भूल गया था मैं, लेकिन यहाँ क्लियर है. Sonnet number 77 from Amoretti and Spencer. As we know that this is part of the कोर्टशिप सीरीज. सर कोर्टशिप सीरीज थी, कुछ 85 सोनेट्स लिखे थे, बाद में उसने 4 और लिखे तो 89 हमारे पास सोनेट्स हो गए. जो हमारे कोर्स में सिर्फ 3 है, सिर्फ तीनों के तीनों हम कर चुके हैं. एक थर्ड वन है जो आपके यहाँ डिस्कस किया गया. अब बात वही आ गई कि सर आरटीसी कैसे करनी है, वो आप समझ गए थे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपको टेस्ट को क्लियर करना है. व्हेन यू क्लियर द टेस्ट यू नो हाउ टू डू द आरटीसी. अब इस आरटीसी को परफेक्शन में कैसे करना है, किन चेंजेस को लेकर आना है एंड हाउ इज गोइंग टू बी परफेक्ट, उसके लिए वीडियोस को लगातार देखते रहना. दोस्त हु नॉट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस. There are more than 1400 videos on the channel, so you can have every video जो भी आपको चाहिए. अब आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं on Insta too by the name of Classy Rahul. Those who really need the notes and want to score 70 or 70 plus, ये ना मेरा WhatsApp नंबर, तो यहाँ आप करेंगे. नोट्स आर नॉट फ्री, ये आपको पता है. यहाँ से शुरू करते हैं क्लासेस को. क्लास शुरू हुई सर सोनेट नंबर 77. Was it a dream? Oh, did I see it plainly? A godly table of pure worry, overspread with a young cats fit to entertain. The greatest prince, I repeat, the greatest prince with pompous royalty. Now, what does mean by the reality? Or was it a dream? क्यों बोल रहा हूँ उसको पहले क्लियर करते हैं. Here the first line says, was it a dream or did I see it plainly? क्या what he was doing? He was meditating on his fiancée bosom. Fiancée's bosom, bosom, the breast of woman. वो भी उसकी fiancée. Why should he write down that in poetry? While you're looking at the bosom of somebody, ठीक है, you should not write down poetry, especially when she's your fiancée. But this is the class of N. Spencer. He done a great job that it's not been easy for anybody to write down these topics. He done a great job in this and then everything was the of limit को हम पढ़ेंगे, हमने जान चुके. यहाँ पे क्लियर करते हैं, was it dream or did I see it plainly, a godly table of pure wine. So continue meditating on his fiancée bosom. तो beginning करता है पोएट्री की. wasn't confused कि यार ये सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, because this girl was my dream. This girl was my dream and now I'm looking at a bosom and constantly और वो पोज भी नहीं कर रही. He says something. The greatest prince with a pompous royalty, longest while there is a silver dish, did lie 2 golden apples. The 2 golden apples have unveiled the price. It's wonder whether it's a dream or reality described in a particular silver dish. वो हाईलाइट कर रहा है, कह रहा है कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर सिल्वर डिश की तरह है. वो किन लोगों ने ट्राई किया, सोचते हैं हर महान योद्धा, हिस्ट्री से बड़े बड़े योद्धाओं को ले आया और वो यहाँ डाल दिया उसने. चाहे वो पॉम्पे हो, चाहे वो दूसरी कैटेगरी का, उसी लेवल का कोई भी हो, वो भी ऐसी उसको अप्रोच करना आता था. तो यहाँ हाईलाइट द 2 golden apples of unveiled price for passing those which her clues come by. Or those the Atlanta did entice, exceed sweet yet void the sinful voice. Exceedingly sweet. What? So वो एप्पल डेफिनेटली बहुत सुंदर. सर उनको कंपेयर पैराडाइज लॉस्ट में एप्पल था ना जो सिंफुल था, वो डेफिनेटली सिंफुल था. उस एप्पल को टेस्ट नहीं करना था. इसने कंपेयर किया उस एप्पल को यहाँ पे इन एप्पल से जो कि उस सिल्वर जो डिश है उसके ऊपर है. That many sought yet none could ever taste. That everybody loved to taste them, but nobody can taste them. I'm going to read कि ये है क्या एप्पल, किसकी बात कर रहा है, वो क्या हाईलाइट कर रहा है. Then we are having sweet fruit of the pleasure brought from the paradise by love himself and in his garden past. Her breast at the table was sobbing sadly. The apples refers to her breast. It's not a word, it's not an erotic point. Sorry to say, I must say that. This is a part we need to clear. Through this sonnet, he was trying to tell his own feeling for his beloved. The opposite sex definitely attracts, and there's nothing wrong when really opposite sex get attracted towards the female parts. And female do have that as a bosoms. उसने उसको conceptually clear किया और define किया through this sonnet.
एट द बिगिनिंग ऑफ सोनेट मैंने पहले बोला था ये वो सोनेट है जो क्या करेगा, मिंगल करवाएगा, यूनियन करवाएगा। और अट्रैक्शन के लिए उसने मौसम को यूज किया एंड इट मेंशन हिज इंटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग when he was saying was a dream or did I see in a play a godly table of pure void, that he was meditating her bosom continuously and nobody was restricted him, कोई उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है यहाँ, तो उसने अपनी इंटेंशंस फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दी। देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, माय थॉट्स द गेस्ट व्हिच वुड देयर अपॉन हैव फ्लेड, ऐसे मेंशन मतलब बहुत लोग हैं जो ट्राई करने आते हैं but none had achieved that, but he was the luckiest one because he's going to get that, because his fiancée is going to be his wife very soon and he will achieve what he really wants। तो इसको सम अप करना है, हमें क्या इसको लिखना है, किस तरह लिखेंगे, अगर इसको हाईलाइट करना है, चेंजेस क्या आएंगे। द फर्स्ट थिंग हियर द पोएट हैड डिस्क्राइब poem or sonnet So the beginning is here, हमने क्या किस चीज को क्लियर करना है, तो here is the beginning. The poet start his poem of the sonnet by explaining his continuous meditation on his fiancee's bosom. Then come to the next part here, wonder whether the dream or reality. Wonder whether it's a dream or reality, then come to the next part. तो first हमारे पास ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जहां पे हम आगे चलते हैं। Here he describing a particular silver dish. Then he described a particular silver dish with two sweet apples. These two sweet apples are being compared with the apple of the paradise. अब आपने कहा paradise apple, जिनको क्लियर कर सकते हैं हम, हर चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। And many have sought these apples, but none ever tasted them. Really, many have sought these apples. So here the poet had explained his all feelings, जो उसके दिमाग में चल रही हैं, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे है, किन चीजों को समझना जरूरी है और कैसे वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। फर्स्ट अगर आप उन्होंने सोनेट को क्लियर करना था, वहां पे उसने हाईलाइट की थी अपनी फीलिंग को, जहां एक शिप की तरह वंडर कर रहा था। हमें तीनों सोनेट बता रहा हूँ जो हमारे कोर्स में हमें पढ़ने। तो पहले में आपने कहा था सर, जहां पे उसने कंपेयर किया था, सिमिलर मेटाफर को यूज किया था, वहां एक लॉस्ट शिप की तरह कंपेयर करते थे अपने आप को। इट वाज लॉस्ट शिप इन अ स्टॉर्म, जहां पे समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्यों डायरेक्शंस नहीं मिल रही थी उसको। डायरेक्शन क्या था, साइंस फ्रॉम हिज बिलव्ड, किस तरह वो साइन नहीं था, हार मान चुका था, ही वाज अनेबल टू डू एनीथिंग, किसी भी चीज को डील नहीं कर पा रहा था। देन कम टू द 67 सोनेट, वहां पे हमने देखा, वहां उसने अपने कंपेयर किया खुद को एक हंटर से और अपने बिलव्ड को एक डियर से। वो हंटर हार मान चुका था, मतलब कहीं ना कहीं खुद फेलियर कर चुका था कि अब मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा और हार मान के बैठ गया। तो उसी वक्त वो डियर वापस आता है, उसको अप्रोच करता है, जैसे कि उसकी खुद की डिजायर है टू गेट हंट फ्रॉम दैट हंटर। सो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ, यहाँ वो बिलव्ड उसकी तरफ एग्री हो गई है। एंड नाउ हियर दे आर गोइंग टू बी मिंगल्ड थ्रू फिजिकल टर्म्स। अब ये फिजिकल टर्म्स में ही यूज द बॉसम ऑफ हिज ओन फियांसे, उसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप कंपेयर करते हो दैट द टू एप्पल्स ऑन अ सिल्वर डिश आर नोन एज टू द वुमन ब्रेस्ट दैट वाज
रियली द सिंबल ऑफ दिस पर्टिकुलर सोनेट जो इजिली आपको हेल्प करेगा आरटीसी को फाइंड आउट करने में। अगर ये आरटीसी आती तो बहुत इजिली ग्रैब कर लेंगे ये आरटीसी है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो गाइस ये थे वो 3 सॉनेट्स जिनकी हमने बात की थी। फॉर मोर वीडियोस यू नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।